293 VYXYN VYXN company. Discuss the difference between risk and uncertainty in relation to investment appraisal. थियरी बाद में करते हैं। हाँ, हाँ बाद हमेशा की में। तरह पहले एक्सेल सॉल्व कर लेके क्या calculate the expected net present value of the investment project and comment on its financial acceptability and on the risk relating to variable cost. VYXYN company is evaluating a planned investment in a new product costing 20 million. Payable at the start of the first year of operation. Product will be produced for 4 years, at the end of which the production will cease. Investment project will have a terminal value of 0. Financial information relating to the investment project is as follows. गन निकाल रहा है क्या? क्या क्या गन निकाल रहा है 147। कीबोर्ड था, पता है ब्लूटूथ का। मैं वो था और ऑडिट के टाइम पे लिया था वो। हमेशा बाद में लेता हूँ मैं, लास्ट के 15-20 डेज में मैं लेके आ ही जाता हूँ। फुली ईगो डाउन कर कर देता है, क्योंकि टाइप करना हार्ड हो जाता है ना कीबोर्ड के, मतलब लैपटॉप के इसके बाद। तो ईगो बस्टर है वो एक तरीके से। तो सबसे पहले तो हमें इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले हम पर्टिकुलर्स लिख देंगे। लिख देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहता है ईयर 0, फिर हमें ईयर 4 तक दिया गया, तो हम ईयर 5 तक सेफ्टी खींच कर रख देते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 मिलियन, तो -20,000 20,000 हो गया, फिर एक दो, बस ये हमारी हो गई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अच्छे से जा रहे हैं हम लोग। सेल्स वॉल्यूम दी गई है, सेल्स प्राइस दी गई है, फिक्स्ड कॉस्ट दी गई है, बहुत बहुत ही बढ़िया। इन सब की इन्फ्लेशन भी दी होगी, पर्टिकुलर्स। These selling prices have not yet been adjusted for selling price inflation, which is expected to be 3.5. Annual fixed costs are given above in nominal terms. ठीक है, मतलब ये सही है, इनमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें नेक्स्ट में हमें वेरिएबल कॉस्ट के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले इधर तक आ जाते हैं सेल्स में तक गाइस। मैं आपको नीचे रखता हूँ हमेशा, चेहरा थोड़ा कम, ठीक है। क्या है ये सेल्स? सेल्स वॉल्यूम ये सेल्स वॉल्यूम जो मेरी आती है वो आती है 440 550 123।
सेलिंग प्राइस 26.5, 28.5। These selling prices have not yet been adjusted for the selling price inflation. So 1.035, इसको सेल्स में इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट मुझे लगता है उन्होंने दिया हमारी नॉमिनल टर्म्स में, मतलब उसमें कुछ बदलाव लाने की शायद जरूरत है नहीं। उसको वैसे ही लिख सकते हैं। 1100, 1 2 3, 1 1 2 1 0 0 0, 1 1 5 5 0 0 0, 1 2 0 0 1 2 3। नेक्स्ट आती है वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, इसमें जैसे जैसे मैंने बताया था कि एक थोड़ी सी एडजस्टमेंट होती है प्रोबेबिलिटी की। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड्स ऑन whether competition is maintained between key suppliers of competence, sorry, of components. The purchasing department has made the following forecast: competition strong, moderate, weak। ये तो ठीक है, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी दी गई है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसकी ई वैल्यू निकालिए, विच इज एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। और इसे करेंगे वेरिएबल कॉस्ट मीडियम प्रोबेबिलिटी वेरिएबल कॉस्ट। ये 0.2 से पहले जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वो उसका लिंक देके आ गया था, वो भी आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, सब वीडियो डाल ही देते हैं हम लोग। तो अभी ये आ गई हमारी वेरिएबल कॉस्ट की। हमने क्या किया, हमने खाली इसको की वैल्यू निकाली, एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने खाली मल्टीप्लाई किया, उसका सम लिया। सो ये होती है वेरिएबल कॉस्ट, या फिर इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। का नाम होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन या फिर सम ऑफ आउटकम इनटू प्रोबेबिलिटी। Variable cost in this forecast are before taking account of variable cost inflation of 4%। फिर क्या करेंगे, इसको हम पूरा करेंगे कॉपी पेस्ट। हमने कर दिया कॉपी, दिया पेस्ट। ये भी हमने यहाँ पे डाल दिया। हमारी इन्फ्लेशन हमारी कितनी की उन्होंने बोला है, 4%। हमारी वेरिएबल कॉस्ट इन्फ्लेशन है 1.04 की। तो ये भी चेंज हो गई होगी, ये भी बिल्कुल चेंज हो गई है, और ये भी बिल्कुल चेंज हो गई है। इन्फ्लेटेड कॉस्ट पर यूनिट लिख देता हूँ, इन्फ्लेटेड कॉस्ट पर यूनिट। सिर्फ वॉल्यूम तो वही रहेगा, मैं इसका वॉल्यूम वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे लिख दिया भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गई। हम आगे जाते हैं, हमारी ये भी खत्म हो गया है, हमारे यहाँ तक हमारा सम हो गया।
बचते ये 2 पैराग्राफ्स खाली। VYXYN company can claim tax allowable debt of to 25% per year on reducing balance basis on the full investment of 20%, pays corporation tax of 28% 1 year in arrears। मुझे लगता है हमारी टर्मिनल वैल्यू यानी कि हमारी जो रेसिडुअल वैल्यू है या फिर स्क्रैप वैल्यू बोल लो वो 0 है। हमें कॉर्पोरेशन टैक्स जो भरना पड़ा है वो बढ़ रहा है 28% पे, वो भी इन अरियर्स। तो हम टैक्स लगाएंगे यहाँ पे, फिर चार्ज कर दिया, बिल्कुल सही हो गया। पता है टैक्स अलाउेबल डेप्रीसिएशन एंड डेप्रीसिएशन है इसका वो रिड्यूस्ड वैल्यू भी है इसकी। इसकी तो कोई टर्मिनल वैल्यू उसकी कोई है ही नहीं, 0। तो भी R44 R46 और यहाँ से छोड़ो गेम लिंक की दे देते हैं इसमें पे जाके। ये 0 आती है टर्मिनल वैल्यू मुझे यहाँ पे। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, तो यहाँ पे आते हैं प्लस प्रॉफिट माइनस टैक्स प्लस टैक्स लायबल डेट प्लस टर्मिनल वैल्यू। हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई वर्किंग कैपिटल वगैरह की चीज यहाँ पे थी ही नहीं हमारे लिए। अभी यहाँ तक भी सम हो गया। फिर अभी it is planned to finance the investment project with issue costs with issue of 8% loan notes redeemable in 10 years time। VYXYN company has a nominal after-tax weighted average cost of capital of 10%, a real weighted average cost of 10%, and cost of equity of 11%। Okay, this is interesting। तो मुझे ऐसा लगता है कि weighted average cost of capital वो भी after tax is should be used as our discounting। real तो नहीं होगा, ठीक है, अनलेस मैं पे पूछा गया है। नहीं पूछा है, ऑब्वियसली नहीं पूछा है। तो डिस्काउंटिंग शुड बी एट 10% मेरे हिसाब से, और मैं वही हुई है। तो लेट्स गो अहेड। डिस्काउंटिंग प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी हम यहाँ पे चेक करेंगे। 10%, तो यहाँ पे आएगी 0.909, यहाँ पे आएगी 0.826, यहाँ पे आएगी 0.751, यहाँ पे आएगी 0.683 और यहाँ पे लास्ट में आएगी 0.621।
ये आती है हमारी एनपीवी। हमें क्लोजेस्ट में 100 में पूछा है तो हम बोल देंगे 2840 है, पूछा नहीं गया है, तो लेट्स चेक द आंसर। टू 93 बताया था ना राहुल ने। 290 पे आ गए। 1 होगा, ये 292 होगा, ये होगा 293। थ्योरी का हम बाद में पढ़ते हैं। 2839, 2839। थ्योरी के लिए राहुल का वेट करते हैं एंड वी विल स्टार्ट। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं थ्योरी पे। थ्योरी में दो क्वेश्चंस आए हैं। लेट्स स्टार्ट। Discuss the difference between risk and uncertainty in relation to investment appraisal. Uh, Risk and uncertainty, though used interchangeably, have a major difference which comes into picture during investment appraisal. Risk um, risk can be quantified by attaching probabilities to the particular outcomes. However, uncertainty is a particular thing that cannot be quantified away. As the project life increases, the uncertainty of the amount coming back decreases and the risk on on return decreases. ऐसा कुछ तो था। The risk of rate of return gets higher, नहीं, and the risk on the rate of return gets higher, ऐसा है शायद। देख लेते हैं। The terms risk and uncertainty are often used interchangeably in everyday uh, discussion. However, there is a clear difference between them in relation to investment appraisal. Risk refers to a situation where where an investment project has several outcomes, all of which are known and to which probabilities can be attached. For example, on the basis of past experience, risk can therefore be quantified and measured by the variability of returns of an investment project. Uncertainty refers to the several situation where an investment project has several possible outcomes. Uncertainty refers to the situation where an investment project has several possible outcomes, but it is not possible to assign the probabilities to their occurrence. It is therefore not possible to say which outcome is likely to occur. The difference between risk and uncertainty, therefore, is that risk can be quantified, whereas uncertainty cannot be quantified. Risk increases with variability of returns, and uncertainty increases with project life. So uncertainty of the amount coming back increases with project life. मैं शायद decreases बोल दिया था गलती से, लेकिन risk increases with variability of returns. Variability of returns. ठीक है। Critically discuss how risk can be considered in an investment appraisal process. अच्छे हैं उस चीज के नाम। एक है रिस्क, दूसरा रिस्क एंड अनसर्टनिटी, ये एक पॉइंट हो जाता है। फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, देन रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, सिमुलेशन, और क्या था, एक और था, पे बैक पीरियड था शायद, पे बैक अमाउंट था। देख लेते हैं एक बार। चलिए मैं सही बोला। सेंसिटिविटी एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, पे बैक पीरियड। उन्होंने रिस्क एंड अनसर्टनिटी डाला नहीं है क्योंकि ऊपर ये एक पॉइंट था, बट वो भी आता है, तो वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपन, वो स्क्रैच पैड में लेके। Sensitivity analysis, the technique looks at the effect on the NPV of an investment project of changes in project variables such as selling price per unit, variable cost per unit, and sales volume.
There are two approaches which are used. The first approach calculates the relative, that is percentage change in a given project variable, which is needed to make an NPV 0. The second approach calculates the relative percentage change in the project NPV that results from a given change in the value of the project variable. Sensitivity analysis considers each project variable individually. Once the sensitivities of each project variable have been calculated, the next step is to identify the key or critical variables. These are project variables where the smallest relative change makes an NPV 0, or where the biggest change in the NPV results from a given change in the value of the project variable. The key or critical project variables indicate where the underlying assumptions may need to be checked, or where managers may need to focus their attention in order to make an investment project useful. However, as sensitivity analysis does not consider risk as measured by probabilities, it can be argued that it is not really a way of considering risk in investment appraisal at all, even though it is often described as such. फिर आता है probability analysis. This is nothing but attaching the probabilities assigned. Alternatively, probabilities of different values of project variables can be assessed and assigned. A range of project NPVs can then be calculated, as well as the mean NPV or the expected NPV associated with repeating the investment project many times. Associated with repeating the project many times and investment project many times. The best and worst outcomes and the probabilities. The most likely outcome, मतलब ये सारे वही है कि negative outcome, positive outcome, best outcome निकाल सकते हैं. नीचे risk adjusted discount rate. हाँ, ये सबसे important चीज है, risk adjusted discount rate. It is often said that higher the risk, higher the return. Investment projects with higher risk should therefore be discounted with higher discount rates, and discount rate with a higher discount rate than lower risk investment projects. Better still, the discount rate should reflect the risk of the investment project. Theoretically, capital asset pricing model, or CAPM, can be used to determine the project specific discount rate that reflects an investment project's systematic risk. This means selecting a proxy company with similar business activities to a proposed investment project, ungearing the proxy company equity beta to give asset beta, which does not reflect the proxy beta, which does not reflect the proxy company's financial risk, ungearing or regearing the asset beta to give us equity beta, which reflects the financial risk of the investing company, and using CAPM to calculate a project specific cost of equity for the investment project. KE ढूंढने के लिए पहले डी-गियर करते हैं या अनगियर करते हैं, फिर अपने को बीटा एसेट मिलता है. उस बीटा एसेट को बेसिकली बीटा इक्विटी में फाइनेंशियल रिस्क और बिजनेस रिस्क दोनों रहता है, उसको हम लोग बीटा एसेट में कन्वर्ट करते हैं बिजनेस रिस्क ढूंढने के लिए. फिर उस बिजनेस रिस्क को यूज करके अपने वैल्यूज डाल के हम बीटा इक्विटी ढूंढते हैं, फिर उस बीटा इक्विटी को हम लोग अटैच करते हैं कैपएम में, जो मिल जाता है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी. Adjusted payback तो वही है कि if uncertainty and risk are seen as being the same, payback can be considered by shortening the payback period, because uncertainty increases the project life. Shortening and payback period will require a risky project to pay back sooner, thereby focusing on cash flows which are nearer in time and less uncertain, and so less risky. Discounted payback can also be seen as considering risk, because future cash flows can be converted into present values using risk adjusted discount rate. वो ठीक है. So ये था सारा risk का.